तो कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा सा अपने दिल पे हाथ रख के बोलना भाई लोग। कुछ फायदा हो रहा है क्लास करने का, या जैसे थे वैसे ही हो? हो रहा है। हम्म। कुछ लग रहा है अपने आप में कि हाँ, कुछ क्वेश्चन जो पहले नहीं कर पाते थे अब कर पा रहे हो, या कुछ इस टाइप का? मेरे अंदर तो बहुत है, जो मुझे नहीं आते थे अब काफी आ रहे। हम्म। पीयूष, फीडबैक। पीयूष। यस सर, बढ़िया है। हम्म। यस सर। नहीं, कुछ चेंजेस करना है पढ़ाने स्टाइल में, या कुछ कुछ सजेशन हो तो दे सकते हो सर। सर थोड़ा आप टाइम बढ़ा देते ना। टाइम ही का तो प्रॉब्लम है यार, टाइम बड़ा। अभी 10th का भी शुरू होने वाला फ्राइडे से। 10th 11th का, 10th एंड 12th। कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा। Okay, now 100. Yes. A man was engaged as typist for month of February. So how many days? 28 days. 2009. So you have to check this year also. If it is a leap year, then 29 days. And if non-leap year, 28 days. Okay, so you have to keep in mind. Okay. So he was paid 500 per day. Okay. ठीक है. A man was engaged as a typist for a month of February in 2009. He was paid rupees 500 per day. But rupees 100 per day were deducted for the days he remained absent. ठीक है, जो जितने दिन वो एबसेंट था 100 रुपीज़ कट जाता है जिस दिन एबसेंट रहेगा, और जिस दिन प्रेजेंट रहेगा 500 रुपीज़ पर डे मिलेगा उसको. ठीक है. ही रिसीव्ड 9,100 एज अ सैलरी फॉर द मंथ. फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क? कितने दिन उसने काम किया? क्या करोगे, क्या रिलेशन है? मेक सम रिलेशन. फाइनली देखो, क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखो. ठीक है. x into 500 plus 28 minus x into 100. तुम रुक जाओ भाई, तुम इक्वेशन बना लेते हो, मुझे पता है. लेट देम मेक इक्वेशन. ओके. ठीक है सैफ. हाँ, तो इक्वल टू के आफ्टर दिस इक्वल टू देयर विल बी 9,100. दिस इज द टोटल सैलरी. नाउ यू हैव टू मेक इक्वेशन हियर. ओके, अप्रोच यही रहेगा. दिस विल बी द अप्रोच. सो हाउ यू विल मेक सैलरी? तो हाउ मेनी डेज? 29 डेज. ठीक है. काम करेगा तो 500, नहीं आएगा तो 100. So how you will make the equation? Just try it. थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन हो जाएगा. x प्लस 500 माइनस 100. नहीं नहीं, आंसर बताओ. अच्छा अनुज, इक्वेशन. एक्स इन 500 तो हो जाए 500 x. अच्छा ये बताओ, दिन डेज, हाउ विल यू डिवाइड द डेज? हाउ यू विल नो दैट हाउ मेनी डेज ही वाज प्रेजेंट एंड हाउ मेनी डेज ही वाज एब्सेंट? हाउ यू विल नो? हाउ यू विल नो दैट हाउ मेनी डेज ही वाज प्रेजेंट एंड हाउ मेनी डेज ही वाज एब्सेंट? anyone except Saif and Sabah. बताएं अच्छा हमने. Except Saif and Sabah. Yes, how you will find that how many days he was present and how many days he was absent? What is the relation between the absent and present? This is absent and this is present. What is the relation between this? Any relation? Anyone with, except Saif and Sabah. Anyone can tell? In absent we deduct the Not asking. day. In I am not asking about deduction. present we add the day. What is the relation between absent days and present days? Relation between these two, absent days and present days. What is the relation between this? Any relation? कोई relation है भी या नहीं है? Directly. है. If I ask what is the relation between Anuj and Piyush, is there any relation? Is there any relation between Yes sir. Piyush? Yes. यस सर. What relation? Tell me. What is the relation? They study in the same coaching. Okay. Any physical relation? Piyush is taller than me. Okay. तो यहाँ पे क्या होगा? What is the relation between this absent days and present days? अब बताएं. Present. No. Present is more than absent day. Okay, Anuj, tell me what is this? What will be equal to this? Anything equal? You can tell. Can you tell anything which is equal to this? Sum of this. 28.
Yes, this is the relation. This is the relation what I was asking. This is the relation. What is the relation? What is the relation? Indeed. The Month of February. if you no month of February, if you add the absent days and present days, it will be equal to 28. Why? If you are absent any day, you will not be present on the, either you can be absent or you can be present. Okay, if you are absent, then if you are present, then you are absent. So absent days plus present days, if you add this, it will always come 28 if it is the month of February. If it is a month of January, then it will come 1. Okay, okay, Piyush. Okay, okay, sir. Now Yes, sir. again one question for Dina. Piyush. Dina or Yogendran? No, no, not Piyush. Dina or Yogendran? This is clear? Dina, Yogendran? This is clear? Yes, sir. Okay. So tell me, if I suppose absent days are X, so what will be the present days? Dina and Yogendran. 2x. 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 Why? This present days are not double of absent days. पीयूष पीयूष क्या y क्या बोल रहे हो? No, you can't say y. Why? Because you have to take only one variable. So this is the variable. If absent days are x, will be the present days. Yogendran and Dina, anyone? You can answer. अनुज, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत नज़दीक पहुंच गए हो, बट थोड़ा दिमाग और लगाओ. 10% और 90% यू आर राइट. 10% और लगाओ, थोड़ा सा गौर करो अपने आंसर पे. यस पीयूष, आंसर भेजो तो उस पर क्या आएगा आंसर? ये तो सीधा. पीयूष, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर भेजो. What will be P? Yogendran and क्या? what will be P? If A is X, what will be P? Anuj. So I'm asking P. Sava is right. Anuj, P बताओ ना मुझे. तुमने पूरा इक्वेशन तो सही बनाया है बिल्कुल. अब P बताओ मुझे क्या हो जाएगा. What is P? चलो मुंह से बोल दो अनुज. Anuj, P is equal to what? P is equal to 28 minus x. Yes, you're right. See, x, if you suppose A as x, so x plus P is equal to 28. I am asking what is P now. So P will be equal to 28 minus x. This is the approach. This is the approach for this question. Okay. So what you will do now? अब क्या करोगे अनुज? Yes. So absent days are x. Okay. Present days are 28 minus x. Okay. So how much you will get? How much you will get for present days? If you present one day, you will get 500. If you present 28 minus x days, this is days. So you will get into 500. Okay. If you get one day for 500 for one day, then for 2 days you will get 1000. Why? 500 into 2. 3 days you will get 1500. 4 days you will get 2000. So 28 minus x days you will multiply with 500. Okay. So this is more. So we will take it this side. No problem. And what is the rate of absent days? If you are absent, you will be 100 rupees. So x, if you are absent in x days, you will be deducted x into 100. Okay. Okay. So you don't know how many days. It is x. So if it is 1, x is 1, then you will be deducted 100 rupees. If x is equal to 2, you will be deducted 200 rupees. If x is equal to 5, you will be deducted 500 rupees. Okay. So like this. So this is the deduction and this is the whole salary. Okay. So the whole salary means 28 minus x into 500. If you subtract this deduction, so 100x. So what will be the salary? This will be salary. So what is the salary? What is the salary? 9,100. Okay. So this you will get for present days. This will be deducted from absent days, and the total is this. Now everyone can solve this equation. So learn how to make equation. Don't learn the question.
Try to learn how to make equation. If you learn this, you can do any question. Each and every question you can solve if you learn how to make equation. Okay. Now solve it and send me the answer. Some answers already came. Sorry. You worked. So if you get x, whatever is the x, that is absent days. Okay. And if you subtract it from 28 days, it will be present days. Okay. You can suppose anything. You can suppose x as a present day and absent day will be 28 minus 2. Anything you can suppose, but equation should be as per your condition. Sir, this is equation 28 minus x into 500. Answer. तो मैंने भेजा है। अनुज का पॉइंट में आ रहा है, डेज पॉइंट में थोड़ी आएगा। सैफ इक्वेशन Sir, गलत I am assistant in. Sir, हाँ गलत है। क्यों? क्योंकि आप 50 से इंटू क्यों किए? अच्छा ये 50 500 है ना सर? 500 है। 500 है। उल्टा लिखे भी है, 28 माइनस एक्स उसमें जाएगा 100 में। एब्सेंट होने वाला को ये मानिए ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही तो मैं बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्स किसको माने, प्रेजेंट की एब्सेंट? एब्सेंट को एक्स माना है। एब्सेंट। हाँ तब फिर सही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला you can suppose anything but you have to make equation as per the condition. sir, Yes. sir, I will. How I many will times you send send? the answer. How many times you send? Right or wrong? This is wrong. Okay, sir. Try to solve this one. Already I made this equation, just solve it. Yes. 7 days. पीयूष 7 days कैसे आएगा भाई? आप 28 गलत लिखे हैं, 2019 लीप ईयर था। लीप ईयर। 2009 लीप ईयर था। अच्छा
इट्स अ लीप ईयर 2009 09 सर मेरा बार बार पॉइंट में आ रहा है, 10 बार ट्राई कर लिया। 2009 हाँ लीप ईयर है। लीप ईयर 5 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20 0 कैसे लीप ईयर होगा? 4 से डिवाइड करते हैं ना, कहाँ लीप ईयर है? 2009 लीप ईयर कैसे होगा भाई? जब 28 से बना के देखे तो नहीं आया, पॉइंट में आया था 15.7। 20 ये गलती से फिर मिसप्रिंट हो फिर गया। जब 29 से बना के देखें तो फिर आ गया। दिस इज रॉन्ग इन क्वेश्चन, इट इज रॉन्ग। ओके हाँ इससे तो नहीं आएगा क्योंकि 900 सबा का कैसे आंसर? सबा 29 रख के बना है। तो 2009 29 डेज का था क्या? नहीं, फिर बोलना चाहिए ना कि क्वेश्चन गलत है। यस 2009 नहीं होगा, 2010 हो सकता है। नहीं 10 भी नहीं डिवाइड होगा 4 से, 2008। हो जाएगा। दिस शुड बी 2008, then it will be 29. Okay, so equation will be x 29 minus x, 29 minus x into 500. Okay, then minus 100x is equal to 9100. Okay, if you multiply 500 with 29, so it will be 00 and 5. सर आ गया मेरा। 5 9 is 45. Carry 4, 5 to the 10 plus 4, 14,500 minus 100x and 500x and then minus 100x is equal to 9100. Okay, so this will be minus minus plus, so 600x 600x equal to this, take this side, so this will come this side, so 14,500 minus 9100. Okay, so if you subtract it, it will be 0 0 and 5 minus 1, it will be 4, and 9 plus 49, 5 plus 9, it is 14. So 5400, if you divide it by 600, 600 9 is 54. So 9 days he was absent. yes sir Okay, 9 days he was absent, and present 20 days. Okay, 29 Yes, sir. minus 9 it Yes, will sir. be 20 days. Okay, clear है सबको? मेन पॉइंट ये है अपना, हाउ टू मेक इक्वेशन, how to make equation you can solve it very easily. Okay, so try to make equation. That's why we are doing from 3-4 days, we are doing. क्या कर रहा है पीयूष? पीयूष नेटवर्क में आओ यार, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो, नेटवर्क में आओ, मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करो, आवाज तुम्हारी आई नहीं। ओके सर, ठीक है। नहीं क्लियर टू एवरीवन? yes sir 101 सेम क्वेश्चन आर्यन की बुक में भी है, पर मैंने सॉल्व नहीं किया है। ट्राई करो ट्राई इट। यस प्रशांत, ये स्ट्रीमर कौन सा वाला है? स्टीमर ये स्ट्रीमर कौन सा वाला है? कौन सा वाला मतलब? अच्छा स्ट्रीमर, मैं स्ट्रीमर समझ रहा, जो यूट्यूब पे लाइव करते हैं ना, लाइव स्ट्रीम। कहाँ चलेगा? स्टीमर जो जहाज, पानी का जहाज होता है ना, शिप। स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 ports in 3 hours. 2 ports हैं ए और बी, ठीक है। डाउन स्ट्रीम यानी कि जिधर से ये फ्लो है उसी स्ट्रीम से जा रहा है। फ्लो के साइड बोलते हैं ना, जिस तरफ फ्लो है रिवर का उसी साइड में जाने को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर आप इसके अपोजिट जाएंगे तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 5 hours व्हेन इट गोज अप स्ट्रीम। 3 घंटे लगते हैं अगर सेम डाउन स्ट्रीम से जाता है तो 3 घंटे लगते हैं।
लेकिन अप स्ट्रीम जाता है तो 5 घंटे लगते हैं. इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट 3 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्टीमर अप स्ट्रीम. ठीक है, थोड़ा सा टफ है. कौन ट्राई करेगा? सैफ ट्राई करो. अरियंत की बुक का एक क्वेश्चन है सर लीनियर इक्वेशन का, वो बहुत हार्ड था. हम्म. हाँ वो समझाइए. इसको तो करो पहले. क्या हुआ, क्या बोले? अनु, पीयूष, यस सर. क्या हुआ? क्या करना है? क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है 101. ओके सर, ट्राई करते हैं. ट्राई करो. Prashant. It's wrong answer. Answer is wrong. Try again, Prashant. You have answered 100 or 101. Right question number also, Prashant. अनुज, सर मैंने एक भेजा है. गलत है, गलत है. देखो डिस्टेंस दोनों का सेम ही रहेगा. ठीक है, डिस्टेंस नहीं चेंज होने वाला है. समझे? दो पोर्ट के बीच का डिस्टेंस विल बी सेम. तो इक्वल डिस्टेंस ही निकालना है. ये फर्स्ट डाउन स्ट्रीम के हिसाब से डिस्टेंस निकालो, अप स्ट्रीम के हिसाब से डिस्टेंस निकालो, दोनों सेम हो जाएगा इक्वल. देन यू कैन सॉल्व. सो इक्वेशन विल बी मेड लाइक दिस. हम भेजे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का इक्वेशन बना के सॉल्व हो जाएगा. करो ना. गलत है सैफ. देखो आप डाउन स्ट्रीम में क्या होता है ना, ये जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ये ऐड होता है. ठीक है, जितना भी स्पीड गाड़ी का है, वो स्ट्रीमर का जो भी स्पीड है उसमें 3 किलोमीटर पर आवर ऐड हो जाएगा. when you go downstream the stream flow will be added to the speed of steamer, and when you go upstream then that 3 kilometer per hour will be subtracted from the speed of steamer. Okay, and distance is equal to speed into time. आंसर भेजे. हम्म. सर आंसर भेजें.
सैफ का सही है, अभी पीयूष का गलत है। गलत है सवा। रुकिए हम फिर से कर रहे हैं, थोड़ा गलत हो गया था, 5 की जगह कुछ और लिख। ट्राई इट अगेन। ये एक्चुअल स्पीड नहीं पूछ रहा, ठीक है। एक्चुअल स्पीड ऑफ स्टीमर अलग होगा और स्पीड ऑफ स्टीमर अप स्ट्रीम अलग होगा, डाउन स्ट्रीम अलग होगा, एक्चुअल स्पीड अलग होगा, ठीक है। तीनों अलग स्पीड होते हैं। एक्चुअल स्पीड में ये 3 किलोमीटर पर आवर जुड़ जाएगा और स्पीड ऑफ स्टीमर अप स्ट्रीम ये घट जाएगा, ठीक है। यू हैव टू सपोज एक्स एज अ एक्चुअल स्टीमर स्पीड। एक्स इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ स्टीमर। सर अभी जो आंसर भेजे देखते हैं, तो और ज़्यादा हो गया, बहुत गलत हो गया। बहुत ही सिंपल है भाई, देखो देखने में बहुत हार्ड लगता है क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। अगर भूल भी जाओगे कैसे सॉल्व करते हैं तो भी तुम अपने आप सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट लेकिन क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट? कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट? बेसिक फॉर्मूला वगैरह। मामूला नहीं है यार। कॉन्सेप्ट मीन्स कि इफ़ यू आर गोइंग डाउन स्ट्रीम, if you are going downstream, then the speed will increase by इट विल प्लस the speed of steamer will increase. Why? Because of the flow of a stream. ठीक है। आप when you swimming, when you are if you swimming, if you have done swimming in the flowing river, you can easily understand. Okay, if you swim in the direction of the flow of river, you will not be tired. Okay, it will be easy to swim. Okay, in the direction of flow of the river. If you swim opposite direction, it will make you tired in 2 minutes. Why? It will take more energy to swim against the flow of river. Okay, swimming against the river is tough. Okay, if flow is there, river is flowing, and if you are not swimming, then also you will be flowing. Okay, you will be flowing without swimming. Why? Due to the flow of the water, flow of the stream. Okay. So whose answer is correct? Only Saif answer is correct, I think. Speed when not moving. Okay. How speed will come when it is not moving? Saif. That will be 0 kilometer per hour. If anything not moving, then how speed you can say the speed 12 kilometer per hour? When it is not moving, water is not Yes, water is moving in any way. It is yes, actual speed steamer is 12, and when it is going downstream it will be 15, and when it will go upstream it will be 9. Okay, good. हाँ, सबा को समझ में नहीं आया। सबा आधा तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व ही कर दिया। हाफ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस क्वेश्चन। हाफ जिस वक्त आप बताए ना कि ऊपर जाने वक्त घटता है और नीचे जाने वक्त बढ़ता है, उस वक्त बन गया। यस, बहुत ही इजी है। व्हाट यू हैव टू सपोज, यू हैव टू सपोज द एक्चुअल स्पीड of steamer is x. So what will be the speed of steamer in the downstream, Anuj? X plus 3. Very good. X plus 3. And what will be speed in the upstream? X minus 5. X minus 5. Why? Why 5? 3 3 kilometers. You are adding this 3. This is time, my dear. This is time. This you have to add 3 kilometers per hour. This will be added to the speed. Oh. What will be the speed of the steamer Yes, sir. upstream? X minus 3. X minus 3. Okay. So what I told you that the distance between two ports will be always same. It cannot be changed. Okay. Until there is an earthquake and this separates, then only it will be distance will be changed. Otherwise, it will not be changed. Never. Okay. So, what is the okay? So it covers the same distance in 5 hours.
Okay, and this distance in downstream, it is covered in how many hours? 3 hours. Okay, so what will be the distance? What is the formula for distance? Anyone? Speed into Speed time. into time. Speed. Speed into time. Sorry. Is S dt STD SDT. This is the triangle. S. Same. Okay, so for distance for DST. सर D ऊपर होता है ना? DST, sorry, DST. DST. So for distance, it is speed into time. DST, it is DST, I forgot. Okay, so distance is equal to speed into time. So this is the speed, and what is the time? For downstream, it is 3 hours. 3 hours. So multiply by, and what is the distance? Here it is 5 hours. Multiply by 3, 5. But both this distance and this distance both are same. Both distance are Yes, sir. same. So you can put here. Yes, sir. Is equal to. Yes, sir. This is the reason we can put is equals to. Yes. So now you can solve it. सर Yes, भेज sir. दिए हम आंसर. गलत भेजे भाई, अभी भी गलत है. कैसे पीयूष, क्या कर रहे हो? इतना समझाने के बाद भी आंसर गलत आ रहा है. How it is possible? Sir, wait, I will see, sir. Check it and अपस्ट्रीम का निकालना है, अपस्ट्रीम का. अपस्ट्रीम में क्या स्पीड होगा वो बताना है. इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता था कि डिस्टेंस क्या है. बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हो. That I have sent. Okay. ये एक्चुअल स्पीड निकला. दिस इज एक्स. सबा, दिस इज एक्स. This is the actual speed of the steamer. Now you have to find the steamer speed in the upstream. So you have to subtract 3 kilometer. Upstream speed is this. So those who have sent 12 kilometer per hour, this is x. And what is x? X is the actual speed of steamer. So try to understand actual speed and speed in downstream and speed in upstream. Okay. Yes, Saba, this is now correct. Piyush, correct it. Anuj, yes, okay, correct. What about our South Indian friends? योगेंद्रन, दीना. Yogendran, Dina, Prashant, where is your answers? Dina, it's wrong. How you are calculating? Just solve this equation. The equation is x plus 3 whole multiplied by 3 is equal to x minus 3 whole multiplied by 5. Solve this one. Yes, Prashant, solve it. Dina, it's not correct. Yogendran, why you are not answering? Prashant. Prashant. पीयूष फिर से Yes, sir. पीयूष फिर से कर. सर क्या करना है? क्या करना है? 3 किलोमीटर पर आवर. आप अभी तो समझाया सर ने. क्या बात कर रहे हो? योगेंद्रन, योर करेक्ट आंसर. आंसर इज करेक्ट, योगेंद्रन. सर एक्चुअल हम निकाल लिए, उसके बाद क्या करना है? अपस्ट्रीम का निकालना है ना? हाँ, तो अपस्ट्रीम का अनुज ने बताया ना, अपस्ट्रीम का.
अच्छा अप स्ट्रीम का स्पीड बताया ना भाई, यही तो अप स्ट्रीम का स्पीड है, यही तो है अप स्ट्रीम का स्पीड। एक्चुअल कितना आया तुम्हारा बताओ, कितना आया? 12 किलोमीटर पर आवर। 12x आया ना तुम्हारा, तो 12 में से माइनस। तो x की जगह 12 रख दो ना। जब अप स्ट्रीम धारा के विपरीत जाओगे तो स्पीड तुम्हारी कम नहीं हो जाएगी? धारा के विपरीत जाओ यस सर। कम होगी, और धारा के समान जाओगे समांतर तो स्पीड बढ़ जाएगी। तैरे नहीं हो कभी नदी में, गंगा में, गंगा किनारे रहते हो? नो सर, क्या किया, नहीं आता ऐसे में। क्या किया जिंदगी में? बेकार है जिंदगी तुम्हारी। सच में नहीं आता, मेरे को तो आता है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्विमिंग पूल नहीं तुम्हारे स्कूल में? पटना के कोई स्कूल में नहीं होगा स्विमिंग। है भैया, मेरे घर के पीछे में ही है। हमारे स्कूल में है। मेरे में तो नहीं है। मेरे स्कूल में भी नहीं है स्विमिंग पूल। पटना में होगा, हॉस्टल वाले स्कूल में ज्यादातर रहता है ये सब चीज। बोर्डिंग स्कूल जो होता है ना उसमें ज्यादा फैसिलिटी होता है ये सब। किसको किसको आता है स्विमिंग? मुझे ढंग से, मेरी दीदी को आता है। मेरे को ढंग से आता है। हम तो आज तक पानी में गए ही नहीं। डूबता कौन है? जिसको तैरने आता है या जिसको नहीं आता है? जिसको नहीं आता है। बट देखो, इतना मालूम है। जिसको आता है वही, जो भारी होता है। नहीं, जिसको आता है वही डूबता है। यही पता नहीं तुम लोगों को। कैसे? कैसे? जिसको नहीं आता वो जाएगा नहीं गड्ढे में, जिसको आता है हाँ, वाह, गड्ढे में, और वही वाह क्या बात। जिसे आता है वो तो गड्ढे से बाहर भी आ जाएगा ना। नहीं आ पाता है ना, फंस जाता है भंवर में या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हम ही लोग का ठीक है। क्योंकि जिसको नहीं आता वो तो जाएगा ही नहीं पानी में भाई, डर के मारे। ऐसा तो है कि जिसे आता है वो समुद्र में कूद जाएगा सीधे। उतना ही समुद्र में नहाए नहीं हो तुम? गए नहीं हो गए? नहीं ऐसे तो नहीं ना है समुद्र गोवा में। जाओ, गोवा जाओ, मुंबई जाओ, देखो समुद्र में कूदते हैं लोग। चलो नेक्स्ट, समझ में आया सबके? भैया पीयूष आंसर मत भेज दो। So Dina told भेज रहा हूँ। actually we are doing some jokes, that's why. No problem. No problem Dina, this is not from your course. Just we are kidding. Don't take tension. थोड़ा सा भी हिंदी नहीं समझ आता है। No. Yogendra knows Hindi but Dina don't know. Okay, no problem. So talk in English everybody. Sir, what is the reason behind South Indian knows English? They don't know Hindi because they don't study Hindi, they don't speak in Hindi. They have their own language, Tamil. They use English since their birth. Yes. But there is uncle near my house. It's neighborhood. He lives in Chennai. He is speaking Hindi, English both, and Bhojpuri also. Yogendran and Pooja also speak in Hindi. No problem. Yogendran and her sister Pooja both knows Hindi. Okay, so next question we will try. Question number 102. A lady went to a bank with 1 lakh rupees. She asked the cashier to give her rupees 500 and 1000 currency. Now it is banned. 1000 rupee currency is there, okay? No, in returns she got 175 currency notes. So total number of notes 175. Okay? Total number of notes 175. It includes 500 notes as well as 1000 rupee notes. Okay? So what will be the equation? Same? Yes, make the Yes sir, easy. very easy, very easy. Answer please. Currently means currency. It is currency. Currency notes means your notes, rupees. Currency is called the name of the note. Like our note is called rupees, rupiah, and the US currency note is called डॉलर। dollar. So this is the currency. Okay, welcome Dina. बहुत इजी है भाई। अनुज, पीयूष, दो क्वेश्चन पूछा है पीयूष।
ईच करेंसी नोट्स का बताना नोट। Sir, I have also sent the answer. हम 175 करेंसी को बताया 500 को बता रहे हैं 25 को बताओ बना लिए बता रहे हैं है क्या? क्या अरे 175 का बताया हो तुम। यस सर 500 को अरे बता दो 500 एंड 1000 का बताना है, 500,000 का बताना है। तुमको यही नहीं, यू डोंट नो व्हाट यू आर, व्हाट इज दिस दीना, सो मेनी आंसर्स। देयर इज ओनली टू टाइप्स ऑफ नोट्स, 500 and $1000 व्हाई दीना, इट्स नॉट डॉलर, इट्स रुपीज, RS। पीयूष, दोनों का भेज देंगे अरे भैया 175 का नोट होता है क्या? सर वो 1000 है तो सॉरी हम गलती से हो गया मैं क्या अंतर्यामी हूँ क्या? Sir, answer sent. यस यस, यू आर राइट योगेंद्रन। सर हम प्रोसेस लिख दिए वो भी गलत Sabha, I think it's wrong. So you didn't told mine is right or wrong. I am matching with you. All the answers are matched with you. Oh, You are the reference point. आप सही से लिखे है ना Now it's okay. Yes, now it's okay, Sabha. Deena, correct it. What is your answer? Prashant is not answering today. Why? Is there Prashant is there? Yes. Prashant, why you are not sending answers? 150. Sir, I sent. One answer Sir, I is, sent answer. one answer is okay. This is the number of 500 rupee notes. What about the 1,000 rupees? Sir, 25. Okay, okay. Yes, Dina, it's correct for 1,000 rupee note. What about 500 rupee note, Dina? Yes, next question, try it. 103. So no need to explain this question. 102. according to me, no, sir. Dina, you got it or not? Sir, I didn't get it. Huh? Why? I didn't get it. Who? Suraj? Who is Anuj. Anuj. So your answer was, you did not send answer? Yes, sir. I thought you will send answer. Okay. So why did not you did not answer? Why you did not get it? What is the problem? Tell me the problem now. Everyone has answered. Why you did not answer? Where is the problem? Just tell me. How you approach the question? What you did? Yes. Anuj, बोलो भाई. Yes, sir. In making equation. There are 500 rupee note, okay? 500. And there are 1,000 rupee note. Okay? So how many notes of 500 and how many notes of 1,000? 1 lakh. No, that 1 lakh is the total money, total amount. Amount is different things. If you add 5 rupee plus 5 rupee, okay, so amount will be 10 rupee. Dina, it's not correct. Try to understand here. 500 plus 500. So this is the total amount. But what about the total number of notes? How many notes? 175. तो वहां का आंसर बताते हो, वहां पूछता हूं तो बताते ही नहीं। आंसर वो करो, आंसर व्हाट आई एम आस्किंग।
Yes, how many notes here in this question, in this example? Anuj. 2. Dina, it's wrong. Yeah, now it's right. Last answer is right. So 2 notes and amount is 10. Okay. So same here, amount is 1 lakh and total currency note is 175. Okay. If two types are there, so A and B, wherever 2 types are there and you have given the sum, okay, this is sum of the notes, sum of the 2 types of notes, number of notes. So if you suppose the number of 500 rupee note is X, then how many notes will be of 1000 rupees? How many notes? X plus 1000. X plus 1000. अरे भैया फरवरी के महीने में क्या किया था, भूल गया अभी? तुम ही आंसर दिए थे ना, यू हैव आंसर्ड। मंथ वाले क्वेश्चन में आंसर किया था ना? Yes sir. चलो मैं दूसरे I will tell you the other way, then you will always remember it. Okay, this is the other way of understanding, just for understanding, not this is not the way to solve, just to understand. So suppose X is the number of 500 note, okay, and Y is the number of 1000 rupee note. Okay, this is 500 rupee note, number of 500 rupee note, and this is number of 1000 rupee note. Okay, if you add it, how many notes are there? Anuj, Piyush? 1500. Oh, don't confuse. These are the amount of money. 500 and 1000 are the value of those money. These are notes. Okay, and these are number of Yes sir. number of notes. Number. So how many number of notes in question? 2. 2. आज फिर तुम्हारा दिमाग कहीं और है अनुज। शाम में नाश्ता नहीं मिला क्या घर पे? क्या खाया नाश्ते में? इवनिंग स्नैक्स में क्या लियो अनुज? रोटी सब्जी। इसीलिए नहीं चल रहा दिमाग। रोटी स्नैक्स में रोटी सब्जी खाओगे तो क्या होगा तुम्हारा? नींद आने लगेगी। स्नैक्स में हल्का फुल्का खाना चाहिए ना कुछ। भूंजा वूंजा खाया करो बिहार का, बहुत दिमाग तेज चलता है। भूजा पता है? मेरे पापा खाते हैं। यस, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ नोट्स. ओके, दिस इज the value of note. 500 is the value of note. Okay, so don't consider it. This is a type of note, this is B type of note. Okay, forget it. This is A type of note, this is B type of note. Okay, so what is the total number of notes? See this one, 175 is the currency notes. Total currency notes in all means what? Total currency note is 175. Okay, so this is 175 number of notes. समझ में आया अनुज? Yes sir. 175 notes are there. It's not a value, it's only the number of notes. गिनती के notes कितने हैं? notes समझ रहे हो ना? रोकड़ा। Yes sir. कितने नोट हैं? total note is 175 and this is A type note and B type both. This is the sum of notes. So if you suppose this one X, so what will be the value of Y? Simple. What will be the value of Y? यहाँ से Y is equal to what? 175 minus X. Yes, it's very easy. 175 minus X. So wherever you got this type of things, where two things, if you have given the sum of two types of things, it can be anything. It can be girls and boys, it can be notes, it can be books, two types of books, it can be anything. Okay, so anything, if you have given anything, the sum of their numbers A plus B is equal to 50 or any number. So if you suppose one as a X, the other will be 50 minus X. Okay, anything, if you suppose the number of A type is X, so what will be the number of B type? It will be total minus X, whatever will be total. Here it is 175. In February month it was 29 days. Okay, so anything, if you suppose X, the other thing will be subtracted from the total. So total minus X. Okay, you got it? Yes sir. Yes sir. Yes, you got it. So now you can solve this one. How you will solve? Now you can solve, or I should explain? You can solve or I should explain? Sir, you explain. And you will learn it. Okay, this is 500 note. Now we are talking about value.
So this is value of the note. Okay, why? Because this is also a value, 1 lakh. You have to make it equal to 1 lakh. So how many notes of A type means 500, x number of notes. Okay, x number of notes 500. So what will be the number of notes of B type? It will be 1 lakh minus 1000. not one. नहीं. Number की बात हो, 175 minus x. This is the number of notes. This is number value of notes. This is value and this is value. Value में जब number of notes multiply करेंगे, if you multiply the number of notes with the value of notes, you get the exact amount. This is the exact amount. Okay, plus this is the exact amount. So if you add this exact amount, you will get 1 lakh. Why? Because she gave 1 lakh to make it change in two types of note, 500 and 1,000 currency notes. Okay. Okay, this one. Yes, sir. Dina, you answered correctly after last time. What about Prashant? Prashant answered only one. Sorry, sir, typing mistake. Okay, no problem. Okay, so solve करो भाई अनुज, solve it. ये कितना हो जाएगा first? 500x. Okay, 500x plus what will be this 2 times? Okay, so 1 time will be 175,000. 175 and 1000 and minus 1000x. That will be equal to 1 lakh. Okay. How easily you can solve? Yes, sir. This one you will get minus 500x. It will go that side. So 1,75,000. This will come this side. It will be minus. Okay, so 1,75,000 minus 1 lakh. So it will be 75,000. Okay, equal to Yes, sir. 1000x minus 500. It will be 500x. x. 500x. So what is x equal to? 75,000 divided by 500. So 2020. 130. So 125, 150. 5 ones are 5, 5 fives are 25, 500, 150. So what was the x? X was the number of notes, 500 rupees. So what is the number of 500 rupee note? It is 150 notes. Okay. So what about the other 1000 rupee note? It will be 175 minus 150. So it will be 25 numbers. Okay. So 25 numbers of 1000 rupee note and 150 numbers of 500 rupee note. समझ में आया अनुज? Yes, sir. कुछ को समझो, क्वेश्चन नहीं रटो. क्वेश्चन रटोगे फंस जाओगे. कोई फायदा नहीं पैसा देके पढ़ने का. Okay. Now 103. Question number 103. So easy question. I have also. You have sent? कहाँ किसी का आंसर है? ओके. मेरा आया है। आ गया. मेरा योगेंद्रन का भी आ गया. क्या बात. सबका सेम ही आंसर है. पीयूष का भी सही है. क्योंकि बहुत इजी है. सवा का भी सही है. और अनुज इसको देख लेना, अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना. ठीक है. 104 पे जाते हैं डायरेक्टली. चलो स्टार्ट. In point, it will come in point, Dina. It is in fraction. Answer in fraction. Answer in fraction, please.
Prashant. Yes, it's okay, Prashant. 103. Correct. Yogendran. Yes, it is in fraction. Piyush, it's okay, I think. Yes, it's correct, Piyush. अनुज इसको सॉल्व करो भाई. Yogendran. Answer in X. You have not answered. This is the equation. Equation क्यों भेजते हो अनुज? Solve करो ना उसको. Solve it. Dina, it's correct for 103. Question number 103. Now you have to answer 104. It's correct for 103. Dina and Prashant. Now solve for 104. Sir, check me. Who? Not received your answer. Yogendran. Yogendran. You have sent this equation. Send me the fraction, rational number. Answer will be in fraction. Dina, it's not correct. Saif Ali, it's not correct. 104. क्या बात है? सैफ का गलत हो गया, पीयूष का सही हो गया. So answer is no. It's not correct, Yogendran. Try it. Dina, it's not correct. Not correct. Not correct. Dina, don't send answers like this. Solve it and then send. You are just solve it. See, very simple. This numerator denominator question is very simple. Numerator and denominator question is very simple. Sir, I have sent. Yes, you are right, Yogendran. You are correct. Your answer is correct. It's very easy question. Denominator of a number is 4 less than its numerator. Okay, 4 less than its numerator. So if numerator is x, so what will be denominator? X minus 4. If 6 is added to the numerator, it becomes thrice the denominator. Find the fraction. If 6 is added to the numerator, if you add 6, x plus 6 equals to 1 by 3. 1 by 3, it becomes thrice the denominator. Is equals to 1 by 3. Yes. So x, so see, the original fraction is 1 minute, x by x minus 4. So this is numerator and this is denominator. If you add 6 in numerator, this is adding 6 in numerator. Okay. So it becomes, if you add 6 to the numerator, it becomes thrice the denominator. So it is 3 times the denominator. It is equal to 3 times the denominator. Denominator is what? X minus 4. Now solve. Sir, I did the opposite. I multiplied 3 with x plus 6. You are very near, Dina, you are very near. Just correct it. Solve this equation, you will get the answer. It's not correct. Dina, don't do like this. So many answers. Check it. So this is numerator, this is denominator, and what is the relation? If you add 6 in numerator, it will be 3 times the denominator. So it is equal to 3 into denominator. Now solve it. Wrong. Now Saif is right. Dina is still wrong. Just try it. What you get x? Dina, tell me what you get x. Tell me. What you get x? Dina, what you get x? Yes, Saba is correct. Dina, what you get x? Dina, I think you got x is equal to 9. You got x is equal to 9.
So what is the fraction? Fraction is here. So it will be 9 and in numerator is 9. Why? Because it is x. No, x is equal to 9. So x minus 4, that is 9 minus 4. It will be 9 by. Sir, I have sent the answer. I have already solved. You are sending answer. Already solved. So how you will solve this one? X plus 6, simple, x plus 6 equal to 3x minus 3 4s are 12. Okay, so this x will come this side, it will be 2x. This 12 will come this side, it will be 18. 12 plus 16, it will be 18. So x is equal to 18 upon 2, it will be 9. So x is 9, so numerator is 9 and denominator is 9 minus 4, it will be 5. Very simple, very easy question. अनुज इतना easy question क्यों नहीं कर पा रहे भाई? Yes, next question. 105. Sir, send the answer. 105. Yes, sir. Okay. No. Okay. So what is asking? Absent or present? How many days it was? What is the question? It was 30. How many days did he remains absent? Okay, correct answer. Answer is correct. Yes, Yogendran, very good. Sir, this is last question or not? Yes, it will be last question. Try to solve all these questions, okay? Yes, Dina is correct. Piyush correct. क्या हुआ? सैफ का आंसर नहीं आ रहा भाई. सैफ सबा क्या हो गया तुम लोगों को? सैफ करेक्ट. Hello. Yes, Dina. Then off your mic. अनुज आंसर भेजो भाई. Prashant, okay, it's correct. So now everyone knows how to make the equation. Okay, so be ready for the test tomorrow. And first you have to give Okay, sir. test in the limit. Okay, time limit. So I will send a special link for the test. Everyone, those who are in group, coaching group. Okay, so try it. It will be 10 questions and I will give you 30 minutes. It will be hard. Okay, tough questions little bit. So I will give you 30 minutes for solving these 10 questions. Okay, Okay, sir. Okay, sir. try to solve it before the class. And Okay.